नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल द ह्यूमेन ट्रैवलर्स। और आज हम शेयर करने वाले हैं अपना एक्सपीरियंस कुद्रेमुख ट्रैक का आपके साथ। सो दिस इज द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग। दिस इज द बेस ऑफ कुद्रेमुखा। And it is beautiful. Entrance, that's a village home. Room, small and cozy. देसी फूड एंड ब्रेकफास्ट, चावल के आटे की रोटी एंड कोकोनट चटनी। वाओ! यहाँ पर पहुँचने के लिए हमने बैंगलोर से बस बुक की कलसा के लिए, और वहाँ से हमने जीप बुक की मुलुडी विलेज जो हमारा बेस है। आज हमारा डे 1 है, सो वी आर नॉट गोइंग फॉर कुद्रेमुख ट्रैक बट अ शॉर्ट ट्रैक विच इज नोन एज बामीकोंडा ट्रैक। बामीकोंडा एक अनएक्सप्लोर्ड हिल है जो कि सिचुएटेड है वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका में, और ये ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स ट्रैकिंग है बोथ वेज। जैसा कि हमने बताया, हम अरुण होम स्टे में रुके हैं और अरुण अन्ना के फादर हमें इस ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। अरुण अन्ना के फादर ऑलमोस्ट 60 प्लस होंगे और उनकी स्ट्रेंथ देख के हम इतने हैरान थे कि वो ऐसे पहाड़ चढ़े जा रहे हैं जैसे उनके लिए कोई सिंपल सा टास्क है। जो आप अभी नज़ारे देख रहे हैं वो हम पीक पे पहुंच चुके हैं, वहां से आपको ये व्यू पॉइंट दिख रहा है। बामीकोंडा ट्रैक करने के बाद हम अपने होम स्टे वापस आ चुके हैं। हमने एक डिलीशियस लंच कर लिया है और अब हम थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद सोमवती वाटरफॉल्स की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ वेरी क्लोज बाय टू दी होम स्टे। सोमवती वाटरफॉल्स एक छोटा सा वाटरफॉल है एंड ये एक सेक्लूटेड वाटरफॉल है जहाँ बहुत कम लोग आते हैं। इसका पानी आप खुद ही देख सकते हैं कितना क्रिस्टल क्लियर है। We can go beyond into the unknown. I can see it coming up on the horizon. Time to go beyond into the great unknown. Morning from a camp, and after 1 hour we'll start for the Kudremukha trek. This is how our camp looked. Born out from our dreams, come along with me into a world unknown.
So we have started with the Kudremukh trek. It's almost 10 kilometers up and 10 kilometers down. So let's see how it goes. It is known as the paradise for trekkers, and it's the third largest peak in Karnataka. So let's go! To the great unknown. Go beyond, go beyond. Go beyond, go beyond. We are in the middle of a beautiful jungle, which is known as the Kudremukh National Park. It is famous for a lot of birds and a lot of animals also. तो ऐसे कुछ सक्रिय रास्तों के थ्रू हम लोग को ट्रैक करनी है। अच्छा एक्सपीरियंस है। वो जो सामने आप देख रहे हैं पीक, ओ यस दैट वन, वो हमारी मंजिल है। So we have reached a waterfall, or you can call a water stream, which is actually challenging during the monsoons, as the water level goes up to high level. It's a beautiful place to spend time with nature. धूप से जंगल के अंदर आते ही ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ही अलग है। ये हमारे गाइड भैया हैं जो कि काफ़ी टैलेंटेड नज़र आ रहे हैं मुझे। ये बात रियली गुड। ओहो नाइस, से हाय। So this is the third water stream on the way to the peak. This is just so beautiful. Amazing trail. ट्रैक के दौरान we were very surprised to see कि हमें ये प्लास्टिक के रैपर्स बहुत कम मिले। जो भी हमें 2-4 रैपर्स मिले वो हमने खुद से कलेक्ट करके नीचे एंट्रेंस पे जाके डस्टबिन में डाल दिया था। I request all of you, please do not litter such beautiful places. कुद्रेमुख एक कन्नड़ा वर्ड है जिसका मतलब है घोड़े का चेहरा। जैसे आप देख सकते हैं
यहाँ पे आपको हॉर्स फेस्ड माउंटेन दिखेगा। ये जो जंगल का एरिया है ना, ये बहुत ही शानदार है। आपको पता लगेगा क्यों। ट्रैक करते करते अगर आपका पानी ख़त्म हो जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आपको बहुत रिवर स्ट्रीम मिलेंगी बीच में। आप वहाँ से पानी भर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। So that is the peak जहाँ हम लोग को पहुँचना है। थोड़ा सा चैलेंजिंग है बट मज़ा भी आ रहा है, राइट? So that's the last trail. Then we have to go all the way up, and that's the peak. So we have started the zigzag trail. It's a very steep trail, so go slow and steady. We are very near to the peak summit and there's no chance of giving up. How's the Josh? Hi sir! Unfortunately टाइम की कमी के कारण हम लोग ये ट्रैक पूरा नहीं कर पाए। पीक सिर्फ 500 मीटर्स दूर थी। जैसा कि आपको पता है ये नेशनल पार्क है, यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स हैं और हम लोग को वापस नीचे रात होने से पहले पहुँचना था, और इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया और हम वापस नीचे की ओर चल लिए। हिम्मत थी और जोश भी था पर वक्त नहीं था। ज़िंदगी में ऐसा भी होगा कि वक्त होगा पर हिम्मत और जोश नहीं होगा। बाकी अब समझदार हैं। थैंक यू सो मच अरुण अन्ना और उनकी फैमिली को, हम लोग को फैमिली की तरह रखने के लिए।